Okay. What? कान all- में मत चिल्लाओ मेरे। What? बहन सही तो है। की हो तुम। Welcome to our podcast. Welcome to our podcast. Time zones and कैसे बोलेंगे भाई? ये तो बहुत ही छपरी तरीका है. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Yeah, we're ready. I'm so excited, Riya. इधर देखो। Hi, besties. Hi besties. I'm Ishika. And I am Riya. And we are just two people जिनकी वाइब काफी ज्यादा मैच हो गई, पर भगवान जी से हमसे हमारी खुशी देखी नहीं गई हमेशा की तरह, तो he decided to put us apart. And it's not like two cities apart. We are literally two continents apart. So we, as long distance best friends, our favorite thing to do together is to video call each other and gap while doing the most mundane tasks, या फिर while doing the most exciting tasks. Our favorite thing to do is to video call and talk and gap or just be there. So we decided That we'll start a podcast because why Like- not? Yeah. And like every long distance best friend, I think we have discussed this since like the past 2-3 years कि हमें एक podcast start कर देना चाहिए. And now we finally decided to pick up our cameras and put ourselves out there on the internet because might as well become famous out of it. Like we never know. बहुत मेहनत लगती है भाई, इतना समझ लो। बहुत ज़्यादा हम- It is not an easy task, but we are just two girlies trying to girl boss who are not really two strong independent women. स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन मैं बन नहीं पा रही हूँ. ये बस दिखावे के लिए है, but who cares? We have to do Yes. this. So welcome to Our podcast, Time Zone, Time Zone and Tea. Okay, Riya, I can't see you to hang है 2 मिनट से. मैं बस एक्ट कर रही हूँ कि मैं तुझे देख पा रही हूँ. वो सच में मुझे तो दिख रही हो. ओके अभी तो थोड़ा थोड़ा हिल रही है, बट ओके आई कैन सी यू नाउ. ओके सो This is one of the problems of Yeah. being in this long distance friendship कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हैंग होती Yes. रहती है. बहुत ज्यादा भाई, कुछ दिखता नहीं है, बस हम एक्साइट होते रहते हैं. मुझे ऐसे लग रहा है मैं चाय पी रही हूँ, बट है सिर्फ पानी. प्लस सिस्टर, मेरे को चाय पसंद भी नहीं है. आई लव कॉफी. I don't like any of it. Yeah. I love cold coffee. Okay. What is the point of this podcast, Ishima? Okay, first you have to tell everybody how we met and like why you call me Ishima in the first place. All right. Okay. Do you want me It's to a tell? very No, weird I thing. will tell. I No, will tell. okay, Please, fine. please, let me tell. It's Okay, it's okay, like okay, one of okay, my okay. most It's your favorite story to tell. Yeah, I know. exactly. See. So let me begin. शुरू से. So basically, Ishima used to be my senior in school, and I never really knew that she was my senior. One day I just came across her Plus. profile, and I was like, No. What? We were in the same school, then we moved. Like I shifted, like रिया वहाँ से किसी और कॉन्टिनेंट ही शिफ्ट हो गई और मैं दूसरी सिटी शिफ्ट हो गई, एंड ऐसे हुआ था ना. हाँ, तो पर- अबाउट वेजीज एंड वेके. Yeah, I'm talking about veggies and vacay, but then I तो was trying to छोटा करके उसको बताने का, but ठीक है तुम डिटेल में सुनो. नहीं, but हम- let me tell it in detail. Let me start again. So Yeah, okay. so what happened was Ishima and I used to be in the same school, and she was my senior, and I never knew that she was my senior. So Yeah, plus. she knew, like she was best friends with one of the seniors who I knew. Okay, and फिर भी मुझे नहीं पता था कि ये मेरी senior है. But then I think she moved to Hyderabad. I तो altogether moved to Australia. So कोई चांस ही नहीं था मिलने का. Like एक ऐसे 0% था कि हम अब दोबारा मिलेंगे भी, या मिले पहले ही नहीं मिले भाई, दोबारा तो क्या ही मिलते. बट देन नहीं मिलते.
But Bhagwan ji had different plans. Yeah, and the best plan of his entire Ever. I swear. Entire बस तुम हमें creation. पैसा दे दे तुम, मतलब भगवान जी की तुम्हें चरण पी जैसे धोखे I दोगे, बस remember, पैसा भी दे दे. एक मिनट, इससे मुझे याद आया, आई रिमेम्बर ऋषिमा के जो ईयरफोन्स है वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे. शी सेड भगवान जी प्लीज कनेक्ट कर दो, एंड एट द सेम पॉइंट इट कनेक्टेड एंड शी वाज लाइक भाई भगवान जी Connect हो सुनते गए. हैं. I swear to God भाई, मैं चैंडल वाला मूवमेंट हो गया. Yeah. $1 million. I just want to be married again. And I just want $1 million. I wish I could have okay, asked for anyways. that. But Yes. moving Story time. forward, I'm in Australia. She is in Hyderabad doing an amazing job being a content creator, and she was. I was trying. So she had this page. It was called Veggies and VK, and इस पे सारा food blogging का content आता था. And one day I just randomly scrolled through her profile. ऐसे फिर मैंने जाके check किया कि कौन mutuals है, and I was like, oh, so related. How? And then I think I saw उस senior की कोई story where you were tagged, and I was like, how do they know each other? And then I saw another senior की story with you. So you know who two people I'm talking about, right? Yeah. So ऐसा हुआ, and then I just randomly I was like कि है कौन? I scrolled and stalked her अच्छे खासे. I was like, that girl, she's doing an amazing job. ये बहुत दूर तक जाएगी. And then I want to tell. Riya sent me like the sweetest message in the whole world, and she talked about how she like really liked the work I'm doing and how she feels it's very real and how मतलब पता नहीं, बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ. See, I- मैं ही हूँ, मैं हुस्न परी में जाने जहाँ. इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम. ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम. ये देश कौन चला रहा पता है? तुम. लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहे पता है? तुम. अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य, साबुन, निर्मा. मतलब तुम सबसे Riya का message just made me सबसे जवान, and then it made me feel like a girl boss also at the same time. And I remember उसी वक्त के दौरान when Riya was watching ये वाली stories of my other friends and mutuals that we shared, I was watching her stories and I remember she was going through a tough phase in life, and I would like look at her stories and I would feel like कि मतलब यार ये बेचारी बच्ची, like I would feel that way, and I would also relate to a lot of the posts she was Mind you- posting, because I don't think मैं कभी भी tough phase से, ऐसा मेरी हमेशा ही tough phase चलता है, तो मैं relate कर लेती हूँ सारे sad memes से. Any point of my life I can relate. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. दिक्कत है इनकी, एक बार बोलती है शुरू हो जाते हैं तो चुप ही नहीं करती है. मैं बोल रही हूँ, मुझे बोल दे तो shut up. Okay. Sorry. ऐसे करेंगे podcast. Sorry, my bad. So basically, I was trying to tell कि आपने मुझे उस मैसेज के बाद फॉलो किया, because I followed you, and then when you had that वो sweetest वाला मैसेज, you followed me back उसके बाद, and I think then you started noticing कि भाई मैं तो बहुत दुख में डूबी हुई हूँ, गम में डूबी हुई, अबला नारी Oh. बेचारी. You didn't Is follow me back ना पहले. You didn't follow me. I followed you first. Oh, okay. Yeah, I followed you पहले Veggies and VK पे, then I followed you on Ishi Agarwal. So the message you sent was on Veggies or Ishi? It was on Veggies, I guess. So I texted you Veggies पे, and yeah, I was actually going through a very tough phase during that time, and I remember. So जो भी मैंने उनको message भेजा ना, that was out of like admiration, and it was like कि भाई, I admire her a lot. Like, oh my God, she's doing so much work. मुझे लगा कि ये मेरी senior है तो मुझसे बड़ी होगी. But guess her age. पर मैं बोल ही देती हूँ. She is 23 and I'm turning 23 as well in February. So basically we are the same age. Just 4 months apart. Just Yeah, 4 months फिर भी मैं apart. बड़ी हूँ. 4 महीने. ठीक है ना? पैर छू मेरे. आगे. कुछ और Okay, आगे. रिया ये भी डाल सकते हो हम. But yeah, so Okay. this happened, and I remember your that ID also. There was this personal ID, and
this is वो जो लोग नहीं होते जो खुद को बहुत ही ऐसे समझते हैं कि एक प्राइवेट का भी प्राइवेट अकाउंट बनाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स नहीं, एक प्राइवेट का account. प्राइवेट अकाउंट जिसपे सब बकचोदी चलती है, दैट आई मेड दैट एंड आई थॉट ओ माय गॉड उस अकाउंट पे मुझे लगता था मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, but you were and ये यहीं से ही मेरा this is how I fell in love with you, by the way. Please. so many people did, by the way, not just you, like there were Okay, I'm leaving. नहीं. तू समझ तो गई ना मैं किसकी बात कर रही Yeah. हूँ. Okay. Okay. So आपकी जो private ID थी, it was mentioned in the other seniors account and I was like कि I want to be a part of this account because I want to know what is going on in her private life. She's like, oh, the OG girl. बस मुझे इतना फेमस होना है कि पूरी दुनिया को ऐसे लगे इसमें क्या चल रहा है. हाँ तो मुझे ऐसा ही हुआ. I was like, मैं तो घुस के रहूंगी. You know what? Ulterior motives थे वो sweetest message भेजने के because I wanted to get into your private ID. कुत्ती ये तो मुझे कभी नहीं पता था, ये तो मुझे पॉडकास्ट के कारण नहीं पता चल रहा है. नहीं यार नहीं. So I entered. I think I sent her the request and she accepted it because ये बेवकूफ इंसान किसी की भी accept कर लेती है request. हाँ. I was like, if anybody wants to see how cringe and cool I am, go ahead. So I did that and भाई मेरी तो ऐसे हो गए कि भाई ये क्या बनती है. Oh my God. मैंने कहा ये बेस्ट लड़की है, यही तो चाहिए लाइफ में. I want to be like her because you know what happened on that private account? मैं अपनी favorite हूँ. हर सुबह मैं बॉलीवुड गाने चलाती थी और उन पे नाचते नाचते एकदम क्रिंज जो फिल्टर वाली स्नैपचैट फिल्टरों के साथ लोग नहीं उस जैसे 6-7 साल पहले बनाते थे वीडियोस, वैसे बना के मैं अपनी स्टोरीज पे अपलोड करती थी और अपने लिए ही गाने लगा रही हूँ कि तुम मतलब क्या हो I क्या remember. अप्सरा परी मतलब oh my God. हाँ और ये ऐसी हरकतें हुई हैं इनके अकाउंट में. मैंने अपनी आंखों से देखा है. ये रात के चाहे 2 बज रहे हों, चाहे 10 बज रहे हों, चाहे सुबह के 4 बज रहे हों, ये मैडम सोती नहीं थी. ये हरकतें करती थी. ये Yes. ये अपने ऐसे she was like her own fan. She was like the biggest fan of herself. अब क्या हो गया इशिमा? उसके बाद जिंदगी में काफी ट्रॉमा हो गया. उसके बाद मैं किसी और की फैन बन गई और उसने मेरा जो दिल तोड़ा. अब फैन चल ही नहीं रहा भाई, मेरा खराब हो गया है. अब तो सेल्फ लव मर गया है. अब सिर्फ भाई, वैलिडेशन चाहिए होती I है. would just say that I learned self-love from her. That is when I started be like. And now I'm learning from her. And I have How become tables like have that. जो इशिमा पहले थी ना ऐसे कि oh my God, I'm my favorite. अब मैं वो हरकतें करती हूँ. And मेरी cousin जैसे हमारे साथ रहती है, you know, तान्या रहती है जैसे. So everyone around me, when somebody compliments me, no, ऐसे बोलेगा, you look so pretty. I'm like, I know. मैं उनको thank you भी नहीं बोलती. I'm like, I was know. that. You know, I was that तब. And now if somebody says you're so pretty, I'm like, Are you sure? मुझे क्या? मुझे क्यों कह रहा है? मुझे मत बोलो प्लीज, मुझे कुछ हो जाता है. But so we're both very pretty if you Yeah, can't, we if are. you can see guys. Yeah. Okay. So yeah, so when we talked a lot, ये कहानी ना किसी और दिन बताएंगे कि हम कैसे पागल थे, क्या थोड़ा डेप्थ में बाद में जाएंगे. बट टू बी प्रिसाइज ये सब हुआ. मैं इनके प्यार में पड़ गई. मैंने उनसे और ज़्यादा बातें स्टार्ट करने लगी. वो भी मेरे प्यार में पड़ गई. तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और हम एक दूसरे को oh my God, baby boo, I love you ऐसे करने लगे. और फिर उसके बाद there was like एक दिन हम पूरा टाइम आई थिंक 1 घंटा हम कॉल पे थे जिसमें आपने अपने ट्रॉमा शेयर किए, मैंने अपने ट्रॉमा शेयर किए. वी ट्रॉमा बॉन्डेड एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, इट्स सो सिमिलर. यू आर लाइक the bigger version of me, so I am gonna start calling you Ishima. So even though she is 4 months elder than me, Elder. मैं इनको आप करके ही बोलती हूँ. तब से मेरी आदत है आप, इशिमा, आप. I have never called her Ishika because it feels so
odd and foreign. It's like ये हाय हाय ये क्या बोल दिया, ये तो पाप हो गया मुझसे इशिका बोल के. Yeah, and when she's really angry, then she does sometimes, and I'm like, okay, now she's really angry. I'm like, नहीं, मजाक में भी एक दो बार शायद रिया ने बोला, and I'm like, what the hell? मतलब इशिका मतलब मुझे भी सुनने में awkward लगता है. कोई बाहर वाला देखेगा ना हमें इशिमा और रिया करते हुए, तो वो हम पे हंसेगा और हमें बहुत cringe मानेगा. But in like our world, it's awkward to not call each other Ishima and Riya. Yeah. Yeah. So Ishima will go like मेरी बेटी, and I'll be like my Ishima, मेरी मेरी बेटी. Yeah, and I put up stories like that. पहले जब मैं एकदम starting में जब हम एकदम इशिमा और बेटी बने थे, तो I would put stories like my little one. No, my little one. हाँ, my little one, and people and मेरी बेटी भी जब मैं रखती थी, little one तो चल ठीक है, मतलब इंग्लिश में निकल जाता है. मेरी बेटी जब मैं रखती थी, like बेटी मतलब ये क्या, बेटी क्या होता है? And then my mother would go like, हाँ तुम किसी और की माँ बनी हो, खुद को तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की. And for my like, I think our families also it was very awkward. Like her calling me Ishima, इसकी मम्मी कहती थी हाँ दूसरी माँ तेरी बाहर बन गई. And for me calling someone my बेटी, my mother would be like, खुद तो कितने साल की देखा है, बेटी बोल रही किसी को अक्ल है नहीं. No, but then I think our families also grew with us calling each other Ishima and Beti. And like now, they just know now. Now it is like that. Now if I am on call with her, I'll just tell I'm on call with Ishima, and if they have to ask anything about her, they'll be like Ishima कैसी है? So it is like that now. That's like the And it's very normal for her family as well, because I remember going to auntie's place on her place at auntie's birthday recently when I visited India, and auntie को I said इशिमा को वीडियो कॉल लगा. हाँ लगा लो तुम अपनी इशिमा को वीडियो कॉल. That is how auntie was like, and I was like okay. Yeah, मतलब so by the way, we met after like 4 years of being best friends. Finally, she came to India recently. She came उसके पहले भी, but that story is for some other time. हम मिल नहीं पाए थे. But वो किसी और बार की story है. और but इस बार जब भी आई थी, and then she enters like, and obviously like I was like मेरी family से तो मिलना ही है, मतलब my best friends are here, and so I have 2 best friends, actually 3, but let's talk about 2 best friends, Riya and Rahul. And Rahul also happened to be in Delhi when Riya came for a few days. He was there. So I was like कि मेरे दोनों best friends घर आ रहे हैं and मुझे अपनी family से इनको मिलाना ही है. And I was like कि मतलब जैसे ही रिया घुसी, and Rahul, both of them call me Ishima by the way. And so I met Rahul through Riya, and then both of them turned out to be my best friends. So and they come and they are like Ishima, and my mother and father looked at each other, and I still know that after they let it, like Ishima सुनने में कितना अजीब लगता है बेटा. And दो दिन I think उनको थोड़ा लगा होगा इशिमा सुनने में. तीसरे दिन से they were like तुम्हारी इशिमा. I was like okay, now they are also warmed up to Ishima, and now they call mom. I think when Riya texts mom also, she's like तुम्हारी इशिमा. वैसे ही बात करती है मम्मा. मैं बोलती हूँ रिया से बात कर रही हूँ. मम्मी मुझे रिया कहीं मुझे तुम्हारी बेटी से बात कर रही हो, ऐसे भी बोलती है कभी. अब मैं कहा भी बेटी से बात कर रही हूँ. Auntie is it's like that now. I love auntie. Okay. I love auntie so much. So it's like that now. But I think we should move forward क्योंकि हम बहुत narcissist है वैसे तो हम बहुत बोल सकते हैं अपने बारे में. But let's move forward to why we want to do this podcast in the first place, except for like just yapping on the internet, of course. So Riya will tell. Do I have to tell? I too want to be famous. That is my motto. You tell yours. Yeah, but I think there is. Apart from that, honestly, the motive is There is this thing that we both share, love for content creation. Like, this is all. See, when I said ना मैं उनको इशी में बुलाती हूँ because there are so many similar things between us, and this is one of them. कि हम दोनों को इतना पसंद है content creation. Like, I wanted to be famous, and Ishima was like, I want the world to know me, and she wants to do great things. She has big dreams, and I think I have big dreams as well, and we match on that level. कि अगर मैं ऐसा कोई सपना बोलती हूँ ना कि let's say I want to buy a jet, and Ishima wouldn't be like ये कैसा सपना है, थोड़े realistic सपने देखो. She would be same delusion level पे.
I want to buy a jet too for you, bitch. I'll buy it for you. भाई तू टेंशन मत ले That is how she is. I'll buy it for you. दिया मैं एक दिन इतना पैसा कमा लूंगी मैं तेरे लिए जेट खरीदूंगी. हम ऐसे बात करते हैं. So it's like we have big aspirations. Like कितना ज़्यादा वो है. Like इतने बड़े ड्रीम्स हैं कि हमें कभी लगता है कि हम तो पूरा दुनिया ऐसे घुमा देंगे. हम ही हैं बस. We are everything. So we can do it. We are mainly like we trust in ourselves and we are like हो जाएगा हमसे. अगर एक को ट्रस्ट नहीं होता दूसरा बोलता रहता है हो जाएगा. दूसरे को नहीं होता तो पहले वाला बोलता रहता है हो जाएगा. Don't worry. So this is how our equation is ना. हर बेस्ट फ्रेंड की ऐसी इक्वेशन होती है and we are trying to prove कि जब दो बेस्ट फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो they can do wonders together. And Yeah. And we also thought like apart from that like अगर हम core reason बोले ना तो honestly we yap so much and then we talk about like जैसे कभी ऐसी अमेजिंग बातें करते हैं. वी आर लाइक भाई ये अगर लोग सुन लेंगे तो या तो हमें पागल खाने में डाल देंगे या फिर बहुत ही अनहिंज्ड होती है तो किसी को सुननी नहीं चाहिए ये बातें. एंड देन वी ऑल्सो थिंक यार अगर ये इंटरनेट चली जाए बात तो हम फेमस हो जाएंगे. तो हमें ऐसा लगता है. एंड समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर वी आर ऑल्सो लाइक at our worst or like you know we're just giving each other big sister advice or like girl advice and like we're trying to like take care of each other. And maybe like if we put that out there on the internet it might help 1 or 2 or 10 of you or 30 of you or a million of you. We never know but we hope it helps a million of you. yeah So, definitely. yeah but like you know like agar tum matlab maybe this place will be I think when you're not feeling well we just hope that this place becomes your comfort zone. comfort zone. Yeah, you can just listen to two best friends yap and two best friends के पीछे जो है two dumb broke girls trying to make a living and a life and girl boss and achieve their dreams. And yeah and you hope and you feel कि तुम भी कर सकते हो. अगर हम कर सकते हैं तो अगर हमने कर लिया तो कोशिश तो कर रहे हैं हम. But yeah and also for us like very selfishly apart from being famous and earning money apart from that there's one more selfish motive that we want this to be our digital diary. Like, yeah we have like, discussed अगर about it so एक- many times कि हमें कुछ हो ना हो we want it out there ताकि हम 50 साल 60 साल 80 साल के भी हो जाए और उसके बाद हम इस पे आए तो we look at it and it's like our diary like Yeah. पूरी जिंदगी की डायरी कि भाई हमने इस फेज में हमने ये चीज रिकॉर्ड करी थी इसमें ये ये किया किया था. था. हाँ. So it's gonna be like that and I feel it's just a Yeah. beautiful motive. You can't say Yeah, otherwise. and हम 60 साल के जब हो जाए तो हम अपने बच्चों को दिखाए ग्रैंड चिल्ड्रन को कि ये देखो look at this and we play it on our like big villa का you know एक big Theater. पर्सनल थिएटर होगा होम थिएटर में और हम प्ले करें with our whole families and then we video call each other and say कि ये देखो अगर हम तब तक दोनों जिंदा रहे जैसी हमारी हरकतें हैं but अगर हम जिंदा रहे तो हम दिखाएं like ये देखो we're showing it to Kuchu and Puchu and then she'll be showing it to I don't know Bunty Golu and Bubbly. Golu, I don't know. Bunty and Bubbly. But yeah, so that. Oh Yeah, God. I think we have talked about our motive for 30 minutes straight and now we should get Just telling them what they can expect from it. honestly I think what people can expect out of this podcast is कि एक तो हमने बोल ही दिया that we hope that it becomes your comfort space and just तुम जिस दिन लो फील कर रहे हो रात को सोने से पहले you can just watch us for 20 minutes 30 minutes straight and you feel like life's good again and then you go to sleep smiling and And I if think you're going through a tough phase, a bad phase, a good phase, जो भी phase हो ना तुम्हें बस ये देख के अच्छा लगे जीवन में खुशी मिले चैन मिले सुख मिले. plus also we know that not all of the best friends are in the same city or in the same continent. So there might be best friends out there जो हमारी तरह ऐसे मीलों दूर होंगे. So I want this to be their place as well. Like them coming here and being like देख यार ये लोग भी तो है ना दूर तो क्या हो गया बेस्ट फ्रेंडशिप चल ही रही है ना इनकी भी तो हमारी भी चल जाएगी. So yeah it's gonna be a place for you guys where you get hope towards your friendship, towards your relationships
and like you know towards life in general, your dreams, Yeah. like तुम्हें कुछ भी ऐसे ना लगे, impossible ना लगे, because honestly सब possible है. अगर हमने 4.5 years का long distance friendship इतना crazily ace किया है ना, तो actually honestly कुछ भी possible है. हाँ. Because I think through this journey we have lost and gained so many much. new friends. Our whole personalities Have changed so इतना much. कुछ change हुआ है. Everything has changed so much, but this has been the only constant, and it was not rainbows always. Like it was not blue skies and rainbows always. There were 2 years beach mein when we went really like off touch. Like I was unavailable. A lot of things happened which we will talk about it. We'll talk about later. And us phase mein I ended up losing so many friends, but I knew like this friend, like I don't have to worry about losing because this friend made me believe so, and I was always there when she needed. She was always there when I needed, and you know. Matlab, if you are going through a tough phase in even a in a friendship that you really adore, and you're going through a bad phase, we want this space to be like so real that you believe ki, see, matlab, if this does not work out, something else will, but you also have hope in that friendship that it will work out, because honestly, like, I think friendships, हम दोनों को ऐसा लगता है कि friendships के बिना जिंदगी का क्या ही नहीं होता, होगी. मतलब Yeah. I think we just live for our family and friends. One and more so reason much why for we our relate friends. so much to each other and why we are so connected and why we are best friends despite of this distance. Because our thoughts are so similar. We might have different thoughts on different things, but most of it has to be similar. Like एक दूसरे को ऐसा लगता है कि भाई you are my copy. ऐसा ही है. Yeah, and even when we are like, I think when we are fucking up in life, we are just like the reality check to each other when needed. Mostly ये Ria is तो- to me. Like she is the reality check. Most of the नहीं. times she's like, stop, bitch. Like, and I think I am the motherly figure and she is the elder sister figure in this relationship. Yeah, actually, If I've we never, put it I've, like I've that. never thought about it actually, but it is that way. Yeah, it is that way. हमें पता भी नहीं है if this podcast will make it, because we don't know. हम record करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो. It will make it, and I know it will make it. But let's I trust in us. Anything that we do, I trust in us too. anything that we do together, not working is just beyond We'll make me. it. It's just beyond me. Yeah. So Yeah. it will work. Okay. So, yeah, next. What are we going to talk about next? आप बताओ तब तक मैं खुद को ताड़ लेती हूँ मुझे बहुत सुंदर सुंदर लग रही हूँ मैं खुद को मेरे कर्ल्स आर कर्लिंग एंड ओ माय गॉड स्टॉप I think हो गए हमारे सारे topics आज के. Yeah, I think that is it. Yeah. So from the next episode, I think we are gonna Start get yapping like into it. Start yapping. Be very real. Like, and I think every video will have a theme or no theme. Like हम कुछ भी we will I think randomly be talking about travel and अचानक about heartbreak and अचानक about पड़ोस वाली auntie. So we go from like I like anything that. to anything. So Not हम कुछ about भी कर सकते हैं. ना तो- इश्मा no not about पड़ोस वाली आंटी more like about चाचा के ताई की बेटी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई वो भी yes like everything मतलब हम कुछ भी बात कर सकते हैं honestly हमें भी नहीं पता what we are expecting out of the next podcast so we don't know what you can expect but you can expect pagalpan and two best friends yapping that you can expect for sure. It's just I think us yeah in our girl boss era. Although Girl boss era. although अगर हमें कोई sugar मेरा तो daddy like- मिले तो हम आज ये girl bossing छोड़ दें. yes that's the goal I think हम ये पॉडकास्ट इसलिए बाहर डाल रहे हैं कि शुगर डैडी मिल जाए. शुगर डैडी इफ यू आर वाचिंग दिस @ flirting with fate @ what Ria reads please reach out. Okay. I think that's it. So we will see That's you it for in today. next episode. Bye. Bye. मैंने तो रिया को दिया. Okay. मैंने ले ली. Zone out हो गई ना? मुझे सच में बहुत एंजाइटी हो रही है. मेरे को ऐसे आ रही है क्योंकि मैं कैमरा के सामने हूँ पर मुझे एक्चुअल में एंजाइटी हो रही है.
Best friends who procrastinate together win together. Yes. बेंचोद कुछ नहीं है मैनिफेस्टेशन में पढ़ा. Procrastination is the real deal, brother. Oh my god. That's amazing. मुझे भी खाना है, मुझे भी घर जाना है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे को खुद खाना बनाना पड़ता है. Like the things we want to do together, हम बहुत ही बड़े सपने देखते हैं, and sometimes we feel like we don't belong to a room with the people we are sitting, no matter what rooms we are sitting in, we just feel like out of place in terms of the amount of dreams we have, but we get each other. चाहे हम बहुत ही delusional बातें कर रहे हो, but हमें लगता है कि कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, ये तो करना ही है. हाँ, करोड़पति लड़का मिल जाएगा. मिल जाएगा. बाप का इकलौता बेटा करोड़पति मिल जाएगा. डिवाइड होगी. जायदाद पूरी उसकी होगी, करोड़ों की. बट फिर भी हर बार रेड फ्लैग्स के लिए गिर जाते हैं, वो भी जिनके बिल मुझे भरने पड़े. ओके, एनीवे. You are mad. But mainly you, bitch. Please. No, I fall for red flags only in the books currently. यहाँ लगा लूँ क्या माइक में? क्लीवेज ठक गई मेरी. मेरे तो है ही नहीं, मतलब दिख नहीं रही है. देख थोड़ी सी दिख रही है. ऐसे कर देते. ओनली फैंस. मुंह क्यों बना रही है? आलस आ रहा है. सुनना पड़ेगा. हाँ. अरे भाई क्या आलसी औरत है भाई, देखो पॉडकास्ट करना है हमें. आलस देखो इसका. Yes. मेरी आंखें कितनी छोटी, हंसती हूँ तो लगता है नेपाली हो. बड़ी हो जा. चीनी. ओके. थोड़े टाइम में we'll just get time zones and tea on a cup. हम दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है भाई. आई थिंक वी डिजर्व द वर्ल्ड. I know, right? अरे भाई हम ये नहीं डाल सकते. बात करें क्या? एक ऐसा लाफा मारूंगी ना तुमको. Welcome to our. नहीं, वेलकम टू. सारे शब्द तू ही बोल दे. Welcome to our podcast. अच्छा. Time zones and tea. app on the internet because नहीं, बहुत ही बेकार हो रहा है ये. रुक जा.